आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग जब बिजनेस को एक इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट में कैसे हम लोगों को एक सेक्टर को देखना चाहिए। और अभी जो मार्केट में करेक्शन है, बहुत सारे बातें चल रहे हैं, ये सारे को लेके मेरा मतलब व्हाट आई फील, सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। आप लाइक वेन एवर यू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, देर विल बी मल्टीपल सेक्टर। जैसे हम लोग, आप सोचो कि एक स्पोर्ट्स तो सारे स्पोर्ट्स है। फुटबॉल भी एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, आप कबड्डी भी है, बहुत सारे चीज है, अलग अलग आपका स्पोर्ट्स होगा। बट हर स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है कि विराट कोहली बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता है या मेसी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। तो पहले हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी एज एन इंडिविजुअल हम लोगों का कुछ एक स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होते हैं, वो हम लोगों को जानना जरूरी है। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि मार्केट में कुछ ग्रीन हाइड्रोजन का बात चल रहा है, सो ऑल आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल आर जंपिंग इन दैट। और सेमीकंडक्टर के बात चल रहा है तो सारे एक्सपर्ट बन रहे हैं। हम लोग सारे चीज में एक्सपर्ट नहीं है। आप किसी भी एक मैथ्स टीचर को जाके जियोग्राफी का क्वेश्चन करोगे तो वो बहुत अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड that you may be a good investor, that doesn't mean that you know everything. And over a period of time you will find your strength and weaknesses. So मेरा आज के जो वीडियो है उसी के ऊपर है, हम लोगों को कौन सा सेक्टर में कैसे देखना चाहिए। देखो, मतलब बहुत जगह पे कॉन कॉल भी कोई पढ़ के सुना सकता है। मैं शायद कभी कभी मैं हो सकता है, अगर मुझे लगे कि किसी एनुअल रिपोर्ट में कुछ बोलना है या कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ करना है, सो आई विल डू दैट। बट मुझे लगता है तो इंडिविजुअल चॉइस है, मैं क्यों किसी को फोर्स करूंगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बट अगर मेरे पढ़ने से अगर किसी को अच्छा हो रहा है तो फाइन, सो आई मे डू दैट। Try to understand when you are investing, you are a unique person, and whether you are understanding able to understand a valuation matrix properly or not, that you need to find. मेरा माइंड में जो चलता है वो मैं बता रहा हूँ। सो वेन एवर आई लुक एट अ बिजनेस, आई ट्राई टू लुक एट what sort of business it is. Is it a B2C, B2B, B2G? अभी B2C, B2B, B2G और कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, सो बहुत सारे चीज हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, एक बिजनेस का कैश कन्वर्शन साइकिल डिसाइड होता है। कैश कन्वर्शन साइकिल क्या है कि आप पैसा मार कैपिटल की तरह लेके आए और उसके आपने कितने जल्दी आपने कैश टू कैश में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मैं ये सारे वीडियोस उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत कुछ समझते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे डिफरेंट चैनल है। बट जो लोग एक इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं एंड दे वांट टू एक्चुअली अप्लाई, फॉर देम दे शुड लुक एट। I don't know whether like how it sounds to everyone, but I'll make it so एक क्लास वन का मतलब कोई भी अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो वो भी समझ पाए। एंड अगर कोई पढ़ा लिखा like who is very good in under investment thesis and everything, no, they also get to know that exactly like if my logic is right or not. Fine. So now say you are selling, open a food stall, you're selling a certain things, say it is a pizza, and you are having a footfall of 40-50 people every day, so you are keeping your inventory 40-50 आता है तो you are keeping 60 buffer of 10. Now suddenly after a month time you are seeing that some footfall is increasing in your pizza stall, and you are getting a everyday 70-80 footfall, and it is not a one day situation. So what you have done, you are keeping a more inventory. यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक ट्राई टू कनेक्ट हियर, यू आर इन अ B2C एंड यू हैव अ योर ओन प्रेजेंस इन अ मार्केट एंड यू आर असेसिंग कि मेरे यहाँ पे ना इस सारे चीज का डिमांड, कुछ फूड चॉइस हो, आपका फूड का कुछ अलग चीज हो, मतलब बहुत अच्छा है आपका लाइक क्वालिटी ऑफ पिज्जा एंड ऑल। सो दैट इज व्हाई यू आर एक्चुअली गेटिंग सम काइंड ऑफ अ एक्सेलरेशन ऑफ योर एवरीडे सेल्स। तो आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 40-50 पिज्जा आप रखते थे वहां पे आप, या 60 पिज्जा रखते थे उसको आप इन्वेंट्री को हाई करोगे। यस। सो लाइक वाइज नाउ अगेन, इफ
गवर्नमेंट से के फ्लूर का प्राइस थोड़ा कम हो गया है या सब्जी का प्राइस कम हो गया, तो आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा, सो योर मुनाफा ऑल्सो विल गो अप and you will make more profit. Now, giving an one example which we have took last year. Last year, all gold. Gold is what kind of a business? Gold related, Senko jewelry, Kalyan jewelries. Those all are dealing with a B2C. They are not governed by the government policies. Yes, definitely that custom duty related that exemption has helped them हैव सम मोर बेनिफिट, जो मैंने लास्ट में कहा कि आपका अगर कोई वेजिटेबल का प्राइस कम हो जाता है, केचप का प्राइस कम हो जाता है, या कुछ भी कम हो जाता है, एडिशनल जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो अगर कम हो जाता है, हाँ किसी इक्विपमेंट आप ला लेके आ गए तो आपका एक एम्प्लॉय कम हो गया, सो यू विल डू मोर प्रॉफिट। सेम जब ये सारे कंपनी में इन्वेंट्री कब हाइक हो रहा था, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लास्ट टाइम if you take an example of Kalyan, they are a B2C company. So B2C company will be able to assess the market demand because they are in market like a pizza stall. So they able to understand their inventory is moving 5,700 to 7,000, now 8,000. Now can you see the jump over there? That जो मैंने पिज्जा का एग्जांपल दिया है ना, पिज्जा आपका जैसे ही आपने देखा कि फुटफॉल ज्यादा हो रहा है, आप क्या करोगे? अब तुरंत आप इन्वेंट्री को ज्यादा रखोगे। अगर आपने इन्वेंट्री को हाइक कर रहे हो, व्हाट विल हैपन, बिकॉज यू नो द डिमांड इज कमिंग, सो योर क्वार्टरली प्रॉफिट ऑल्सो विल मूव अप। का क्वार्टरली प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा, आपका ईपीएस भी ऊपर जाएगा, सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ फैंटास्टिक रिटर्न। इफ यू लुक एट लास्ट 2 years what happened, 1.5 year, from a 100 200 level to it has gone to 700। तो कौन सा बिजनेस में क्या देखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी पियर्स, वेदर इट इज अ कल्याण ज्वेलरी, वेदर इट इज सेनको गोल्ड, whether it is any other business, they were continuously increasing their inventory because they are assessing the demand is coming, footfall is increasing, so people will buy this thing. Automatically, it will reflect on your top line. Yes. So this is the inflection of a B2C company. Whenever you look at certain B2C company, try to look at what stage you are taking, whether further they're increasing their inventory, so you need to closely follow up there, how many stores, how many point of presence, those all are additional, but the first reflection will come on inventory. Those are the things which one should track through con call, annual report and guidance. The next part is when you are looking at a Jupiter wagon or any other company, Titagar wagon or anything, any railway companies, so these all are driven by a government policy। जितने मतलब इनिशियल फेज 2022, इफ यू लुक एट, गवर्नमेंट वाज फोकसिंग मोर ऑन अ डिफेंस एंड रेलवे। तो डिफेंस एंड रेलवे में सारे जगह पे सेम ही है स्टोरी। B2C में रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट इन्वेंट्री में, बिकॉज दे आर डीलिंग विद डायरेक्टली विद कस्टमर। हियर ऑल्सो व्हेन यू लुक एट नो क्वार्टरली सेल्स इज इम्प्रूविंग, दे आर नॉट सेलिंग मैगी और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ना पिज्जा सेल कर रहे हैं, कि दिस इज ड्रिवन बाय अ गवर्नमेंट पॉलिसी। आपके पिज्जा के दुकान में गवर्नमेंट एक कस्टमर को नहीं भेजता है, वो कस्टमर खुद उसके फूड चॉइस के ऊपर डिपेंड करके आता है। सेम आपका जुपिटर वगन में नहीं होगा। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट इज द कस्टमर, सो गवर्नमेंट विल फ्लोट अ टेंडर, सो हियर you'll have to follow the policy। और अगर गवर्नमेंट टेंडर भी फ्लोट कर दिया है, ऐसा नहीं है कि आज आपने रेडीमेड एक वोगन बना के रखे थे और उसको सप्लाई कर दिए, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, रिक्वायरमेंट होगा। सो दैट इज वाई, जैसे वंदे भारत का कुछ अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, सो यू मे अंडरस्टैंड देयर प्लान एंड यू कैन बैक up certain things and you may be executing your past, but it will take time to execute। so here no, if you look at when their sales top line was growing on the last 2 years time, now if you look at, no, there is a dips or a pause in a thing, and price also giving the same thing because it will take time। So you'll have to understand, are you
able to understand the sector properly. If you are not, then it is a wrong expectation. If you are feeling ये 700 चला गया है, 800 चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, definitely once again the floating of tender will come, again some acceleration will come, because market has already discounted from 4th April. It has gone up from 300, even if you look at the last 3 years, and it has given a fantastic return from a 90 to 700, 800. Now, if there is a pause in their business, once they will increase their inventory, that time only we will see certain, again, a run in any sector, whether it is a Jupiter, or I'm just giving an example. So, at what stage you are participating and what kind of business you are looking at, that also you should know. So, so this is more or less I just want to convey. As of now, whenever you see the price correction is happening, try to understand that these businesses are B2B, B2G, or B2C. If there is a scope, like a bull market is there, lot of buying and selling has happened. So all broker house related companies will be doing good. Water infra companies already done, like all broker house related companies has really done good. Maybe portfolio management related company will do further good. And again, in a water infra also, this is something no where government is focusing. So Namami Gange or any other plans, whatever water related project they have, no, so those will be there. Sorry. So in that case, you need to understand that whether you understand the business properly, whether you are in an early business cycle, whether government is floating more water related tender, government is focusing more on a water, follow the EPS and you'll get the valuation. If you are late in a somewhere and there is a dent in a EPS, or no surprise, generally half yearly all water infra related company will not do good, because of government is mostly doing all the execution on the next half. First half, most of the companies are not having a proper credit limit. Audit होता है, उसके बाद सबको एक बैंक का लिमिट एक्सटेंशन मिलता है, अच्छा फ्लो लिक्विडिटी भी आता है एग्जीक्यूशन करने के लिए. And many companies also in a green hydrogen space, people are talking about they're coming with a very good EPS and all. One has to look at what they're doing. They're doing a lot of dilution in their stake, and they're raising equity. Since they're raising equity, the interest cost is not reflecting. So that is why you're looking at positive EPS. Anyways, that is a different topic. So all are different. Every sector is different, and in between that sector also new themes are emerging. And it is we as an investor, we need to find that whether we are able to understand those things. Bait on promoter. If you find a good promoter, try to understand, try to mate if possible, and do your investment. And it will not be easy for anyone unless they're following a proper way of looking at investment. My only intention is to like, this is a video for mentorship people also, or whoever is with me, a link with from my post also, virtually they are learning for them also, and to all others, the whatever I understand, so just I'm conveying to all of you, so it may benefit you. Okay, thank you everyone.